Hello everyone. A name Perarivalan is in news these days. Why? Because the Supreme Court of India has recently decided Perarivalan's case, and while deciding the case, the court has made some important observations and comments related with the clemency powers, which are popularly known as pardoning powers of governors of states in India. So in today's lecture I will discuss. So आज के इस लेक्चर में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर वन, पेरारीवालन केस कि जो पेरारीवालन का केस था वो क्या था, एंड नंबर टू, पार्डनिंग पावर्स of the president or governors of states, which are known as the clemency powers also. Okay, and number three, some important provisions under the CrPC which allow the center or state governments to uh, grant relaxation in sentence to various convicts in different cases. And number four, some important cases decided by the Supreme Court and the observations made therein. So these are the important areas which we are going to discuss in today's lecture. So first of all, let us know about Perarivalan. Perarivalan का जो केस था वो क्या था? We are going to discuss about Perarivalan's case. Okay? So the name of the person is A.G. Perarivalan, and he belongs to Tamil Nadu. He was accused in Rajiv Gandhi's assassination case. You must be knowing that the assassination of Rajiv Gandhi was held in May 1991. Okay, so मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या होती है, and he was killed by a woman suicide bomber, and the woman was a member of LITE, Liberation Tigers of Tamil Eelam, a Tamil separatist group in northern Sri Lanka. And इस केस में जो A.G. पेरारीवालन हैं उनको डेथ सेंटेंस होती है, और उनकी जो मर्सी पिटीशन है उसको प्रेसिडेंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है 2011 में. एंड देन इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट commuted his death sentence to life imprisonment. So 2014 में भारत की सर्वोच्च अदालत जो है वो पेरारीवालन की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर देती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसको बदल देती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में. एंड देन वेरी रिसेंटली इन May 2022 द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड टू सेट पेरारीवालन फ्री. सो अभी अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मई 2022 का, उसके अकॉर्डिंग इसको पेरारीवालन को जो है फ्री कर दिया गया है. सो आइए अब जानते हैं कि इस सब कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल which is important is Article 72 of the Constitution, which is related with the clemency powers of the President. Article 161 of the Constitution, which is related with the clemency powers of the governors of states in India. Article 142 Clause 1, which is related with the extraordinary power of the Supreme Court. Then sections 433, 432, 433A and 435 of CrPC. Then comparison of clemency powers of the president and the governor. भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर जो हैं किसी स्टेट के, उनकी clemency power की तुलना. Then some important cases
the Supreme Court has decided so far and observations made therein. So ये सब चीजें आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट बनती हैं। सो आइए पहले हम जानते हैं कि आर्टिकल 72 में क्या है, राइट। सो आर्टिकल 72 contains the clemency power of the President of India, right? So भारत के राष्ट्रपति की clemency power की बात करता है आर्टिकल 72, right? So what type of relaxation the President may grant? So ऐसी कौन सी रिलैक्सेशन है जो भारत के राष्ट्रपति किसी कॉन्विक्ट को दे सकते हैं? नंबर 1, पार्डन, राइट। सो पार्डन में क्या होता है? दैट इज द फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मीन्स फॉरगिविंग द क्राइम ऑफ ए क्रिमिनल और ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन, राइट। सो किसी अक्यूज्ड पर्सन का, किसी दोषी का क्राइम और इसकी पुनिशमेंट दोनों को माफ कर देना। एंड सेकेंड इज रिप्रेवल। रिप्रेवल मीन्स to halt the implementation of sentence for the time being. To halt implementation of the sentence for the time being. And third is respite. Respite means lesser punishment in place of the original one. पहले किसी को जो पुनिशमेंट दी थी उस पुनिशमेंट की प्लेस पे उसको लेसर पुनिशमेंट देना। रेमिशन मीन्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस और पुनिशमेंट, ओके, अमाउंट ऑफ सेंटेंस और पुनिशमेंट। सेंटेंस या पुनिशमेंट की अमाउंट, पीरियड वगैरह जो है, जो उसकी अमाउंट है जो उसको रिड्यूस कर देना, ओके। अमाउंट ऑफ सेंटेंस, okay, is reduced, we can say, is reduced without changing its nature. उसकी नेचर में कोई चेंज नहीं होती, बट उसका पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है। देन सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स you can say to put a stay on the you can say on the execution of an accused person's sentence till his appeal is lying pending in a court, right? So जब तक किसी you can say accused person की जो अपील है वो कोर्ट में पेंडिंग है और अभी कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं किया है, सो तब तक के लिए you can say उसकी जो सेंटेंस है उसके ऊपर रोक लगा देना। एंड देन commutation. Commutation means lowering the level of punishment. So punishment का level lower कर देना। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि पेरारीवालन को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको डेथ सेंटेंस हुई थी उसको कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया था। सो ये था what type of relaxations the president may grant. So next है कि in which cases the president may grant a relaxation in punishment or sentence to an individual, right? So कौन कौन से cases में जो president है वो किसी individual को you can say किसी किस्म की कोई जो है relaxation दे सकते हैं उसकी पुनिशमेंट में या उसकी सेंटेंस में। सो ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज इन ऑल केसेस वेयर द punishment or sentence is by court martial. So this is the one point. And second is in all cases where the offense is against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends, right? इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि यूनियन लॉज के अगेंस्ट अगर किसी व्यक्ति का जो ऑफेंस है वो प्रूव हो जाता है
तो उसमें जो उसको सेंटेंस होती है, जब पुनिशमेंट होती है, उसमें रिलैक्सेशन देने का अधिकार प्रेसिडेंट का होता है. ओके, सो दैट इज द पॉइंट देयर. एंड नेक्स्ट, इन ऑल केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस, राइट. सो डेथ सेंटेंस से रिलेटेड सभी केसेस में जो पार्डन करने की जो अथॉरिटी है, दैट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली. सो नेक्स्ट इज important points observed by the Supreme Court so far. So अब तक कौन कौन से important points हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस को डिसाइड करते हुए जो ऑब्जर्व किए हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट the exercise of power by the president under Article 72 is for his discretion, and courts cannot interfere with his actual decision on the merits. Okay, so इसमें ये है कि आर्टिकल 72 के अंदर जब राष्ट्रपति अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो वो उनकी डिस्क्रिशन होती है, और कोर्ट उनके जो यू कैन से मेरिट के बेसिस के ऊपर जो डिसीजन लिए जाते हैं, कोर्ट उनमें इंटरफियर नहीं कर सकती, राइट. So discretion does not mean that the president is not bound to accept the advice of the Council of Ministers. It does not mean so, because according to the Article 74 of the Constitution of India, okay, that all the executive powers of the president are exercised by the aid and advice of the Council of Ministers with Prime Minister, you can say, as its head. Okay, so next is the president can examine the evidence afresh, right. So जो केस प्रेसिडेंट के पास मर्सी के लिए आया है, सो उस केस की जब पहले जो पूरी प्रोसीडिंग थी, जिस एविडेंस के बेसिस के ऊपर उस केस में जो पिटीशन करता है उनको सजा दी गई है, तो प्रेसिडेंट उन एविडेंसेस को एग्जामाइन कर सकते हैं, या अगर कोई नई एविडेंस सामने आती है तो दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट, राइट. एंड नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू हियर, ओके, व्हाट ए पिटिशनर फॉर मर्सी बिफोर ही रिजेक्ट्स हिज हर पिटिशन. ये कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट किसी अक्यूज्ड की जो मर्सी पिटीशन है उसको कंसिडर कर रहे होते हैं, उस समय जो पिटीशन करता है उनको सुनना, राइट, उनकी हियरिंग होना ये कोई जरूरी नहीं है, राइट. द कोर्ट हैज वेरी लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो यहाँ एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस, द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द you can say mercy decision or a decision on a mercy petition taken by the president is allowed. So judicial review can be there, but judicial review is not common. Okay, so it is exercised very rarely, it is not common. Okay, so this is the point here. Next is while deciding such cases, what does the president consider? So अब बहुत important point है कि जब भारत के प्रेसिडेंट जो मर्सी पिटीशंस हैं, जब उनको वो डिसाइड करते हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं. एक्चुअली नीदर देयर आर एनी रूल्स नॉर देयर इज एनी लॉ or nothing has been mentioned in the constitution related with this, but yes, Law Commission of India, okay, in its report capital punishment in India had noted some points that the president may consider while deciding cases under Article 72. So Law Commission of India की एक रिपोर्ट कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया के ऊपर पब्लिश हुई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स का जिक्र हुआ है कि प्रेसिडेंट जब आर्टिकल 72 के अंदर अपनी जो क्लेमेंसी पावर को एक्सरसाइज करते हैं
तो वो कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज वांट ऑफ premeditation, right? So this means you can say the planning by the accused to commit a crime. क्या किसी accused ने जो उसने क्राइम कमिट किया है, क्या उसने उससे पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग की थी या नहीं. अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, वांट ऑफ प्रीमेडिटेशन मीन्स द lack of the proper planning by the accused before committing a crime. So that means because that makes the intention of the person clear, right? So अगर किसी पर्सन ने पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके और फिर जो है यू कैन से कोई उसने क्राइम कमिट किया है, सो दैट मीन्स that is not, you can say, accidental, that has been you can say done, right, voluntarily, right, knowingly, and that was the intention of the person to commit the crime. The second thing is that is the age, mental or physical condition and past conduct, right? जो accused person है उसकी एज, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन, उसका पास्ट कंडक्ट है, जो इन सब चीज़ों को प्रेसिडेंट कंसिडर कर सकते हैं मर्सी पिटीशन के ऊपर डिसीजन लेते हुए. देन एक्सटर्नल प्रेशर विच माइट हैव इम्पेयर्ड इंडिपेंडेंट जजमेंट. सो जब यू कैन से जो केस था व्यक्ति का वो सुना जा रहा था और उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, तब अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर था जिस वजह से जो जजमेंट थी जो वो प्रभावित हुई है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रही, उसका नुकसान हुआ है जो पिटीशन करता को, so that can also be considered by the president while deciding the mercy petition. Next, medical abnormality and so on. So these are the various points according to the Law Commission report which the president may consider while deciding the, you can say, this mercy petition of a person. Okay, limitations of and options with the president of India. जब राष्ट्रपति मर्सी पिटीशंस हैं जो या क्लीमेंसी पिटीशंस हैं जो जब उनके ऊपर विचार करते हैं, उनको कंसिडर करते हैं, तो उनकी कोई लिमिटेशन है तो वो क्या है और उनके पास क्या ऑप्शन होती है, राइट? सो व्हाट इज देयर that while exercising his power under Article 72, the President is required to act on the aid and advice of the Council of Ministers, right? So this is important that the President cannot take the decision at his own on a clemency petition, right? The President has to act on the aid and advice of the Council of Ministers. So this is important here. Next, the Supreme Court held it in Devinder Pal Singh Bhullar versus State of NCT of Delhi, right? So what is important here that while deciding the clemency petition, we can say the aid and advice of the Council of Ministers is must for the President. Okay, so he cannot go at his own. Second important is that while deciding a mercy petition, the President may consult the Attorney General. Okay, so किसी mercy petition को consider करते हुए, decide करते वक्त अगर जरूरत महसूस हो तो President Attorney General को consult कर सकते हैं and he may seek Supreme Court's opinion also. Okay, so President may demand the opinion of the Supreme Court also while deciding on a mercy petition. Limitations of and options with the President of India. So ऐसे cases में जैसे हम पहले भी बात की है, अगर कोई limitation है President की या उनके पास क्या options होती हैं, so यहाँ क्या है that for seeking mercy, the High Court must confirm the death sentence given by a session court, right? Session court एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है, ओके, सो वो
वो कोर्ट जब किसी को डेथ सेंटेंस देती है सो उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट द्वारा मस्ट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो अगर सेशन कोर्ट ने किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दी और हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया, सो देन द पर्सन कैन you can say put a mercy petition before the President of India. The confirmation of death sentence by the Supreme Court is not a precondition for applying for mercy, right? हाँ, जो पर्सन जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो यू कैन से जो डिफेंडेंट है, जो कन्विक्ट है, वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जब मर्सी पिटीशन फाइल करनी होती है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मर्सी पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील की रिजेक्शन या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन है वो पिटीशन करता के अगेंस्ट आया हो वो जरूरी नहीं है. इट मीन्स व्हाट इज देयर. So first of all session court, then high court, okay, and then the person can you can say file the mercy petition directly with the President of India. Okay, so whether to go with the Supreme Court or not, this is not mandatory, right, for moving a mercy petition with the President of India. So this is the point here. The President or Governor cannot consider a मर्सी पिटीशन ऑन हिज ओन. जैसे हमने पहले भी बात की है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं जो वो मर्सी पिटीशन वो हमेशा जो है उसको वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही उसके ऊपर डिसाइड करेंगे. सो दैट इज व्हाई दे कैन नॉट मूव ऑन मर्सी पिटीशन एट देयर ओन. सो नेक्स्ट है जो द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग ए मर्सी पिटीशन, राइट. सो मर्सी पिटीशन को डिसाइड करने में क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ नो रिटन प्रोसीजर, ओके, टू डील विद द मर्सी पिटीशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दिस, राइट. सो कहीं पर कोई भी रिटन प्रोसीजर मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर साइलेंट है. बट नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ए कॉन्विक्ट अंडर डेथ सेंटेंस can file a mercy petition within 7 days after the superintendent of jail informs him about the dismissal or refusal of appeal by the Supreme Court, right. So अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस हुई है, राइट, तो जब यू कैन से जेल का सुपरिंटेंडेंट उस पर्सन को इन्फॉर्म करता है कि उसकी जो अपील है उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है या उसको सुनने से रिफ्यूज कर दिया है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के यू कैन से विद इन 7 days जो कॉन्विक्ट है ही कैन फाइल मर्सी पिटीशन बिफोर द प्रेसिडेंट. ओके, द पिटीशंस आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, who seeks the cabinet's advice. Okay, so it means the petition is presented to the President of India, then President seeks the advice of the Council of Ministers, and according to the advice of the Council of Ministers, he decides on a mercy petition. So this is again important point here. So next is a judicial review of the President's decision on a mercy petition. So एक मर्सी पिटीशन के ऊपर जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, जब क्या है उसमें. वैसे तो पहले हमने किया है कि जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल. ओके, यस, द जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल बट इट इज नॉट कॉमन. ओके, सो व्हाट इज देयर द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट्स डिसीजन to reject a mercy petition is very limited. Okay, so scope is very limited. The Supreme Court orally told in Nirbhaya case, right? So Nirbhaya case में Supreme Court ने जो proceeding थी उसके दौरान ये बोला था. Then if a court finds that the process of the decision taken by the President under Article 72
was not arbitrary or unreasonable, the decision then cannot be interfered with. Okay, so ये कहते हैं कि अगर कोर्ट को ये लगे कि जो प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन के ऊपर डिसीजन लिया है आर्टिकल 72 के अंदर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए, राइट, अगर उसमें कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं है और कुछ भी अनरीजनेबल नहीं है, so then the court would not interfere into the you can say decision taken by the president on a mercy petition. So execution of death sentence after mercy petition is rejected. जब किसी की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद फिर कितने पीरियड के अंदर अंदर जो डेथ सेंटेंस है उसकी एग्जीक्यूशन होती है, राइट. सो इट इज मेंशन्ड हियर दैट minimum 14 days period is to be granted before the execution of a death warrant from the date of communication of rejection of mercy petition to the accused, right. So जब किसी accused की mercy petition president से reject हो जाती है तो उसकी जो communication जब accused के पास जाती है, so उस दिन से लेकर के कम से कम 14 डेज का गैप होना चाहिए उसके डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट. सो मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ए मंथ, राइट, द अक्यूज्ड हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द मर्सी पिटीशन बाय द प्रेसिडेंट. ओके, सो देन minimum 14 days period is to be granted before the execution of the death warrant. It means plus 14 days, right. So the death warrant cannot be executed. It can be executed only after 14 days of the information to the accused. Then no period is required to be granted if it is a second mercy petition, right. अगर किसी की फर्स्ट मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी, उसने सेकंड मर्सी पिटीशन जो है वो फाइल की है, तो इन दैट केस अगर वो भी रिजेक्ट हो जाती है, इन दैट केस यू कैन से कोई ऐसा 14 डेज के पीरियड्स की कोई कंडीशन नहीं रह जाती. देन आर्टिकल 161, we know article 161 is related with the clemency powers of the governors of states, right. So article 161 है जो वो states के गवर्नर की clemency power से related है. Okay, so what type of relaxation in punishment or sentence a governor can allow? एक गवर्नर किस किस्म की जो रिलैक्सेशन दे सकता है, जैसे प्रेसिडेंट के केस में हमने डिस्कस किया है, पार्डन, रिप्रीवल, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंशन एंड commutation. Okay, these are the points. Same. Next is what type of punishment or sentence, okay, a governor may consider under article 161. Okay, so article 161 में किस किस्म की जो punishment या sentence है उसको consider किया जा सकता है. First thing is all sentences or punishments which are against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends. Okay, so it means you can say offense against any state law, right. So अगर किसी व्यक्ति ने state law के against कोई offense किया है and he has been awarded a sentence, so then in that case okay, the clemency petition can be heard by the governor. But important point here is that governor has no power of pardoning a death sentence, right. So governor death sentence में pardon नहीं कर सकता. Pardon means as we have already discussed, that is a complete forgiveness. Okay, complete forgiveness. Forgiveness of what? Forgiveness of crime and forgiveness of the sentence also. Okay, so that is the pardon. Okay, so ये death sentence के केस में जो pardon की power है, that governor of a state doesn't enjoy in India. Next, some important points, two important points in fact there.
first, governor is unable to pardon a death sentence, right? जी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता. Okay, even though it is awarded under state law. The next is, yes, the governor can suspend, remit, or commute a death sentence on the advice of a council of ministers. So very important point. Okay, so first is a pardon of death sentence. Second is suspension of death sentence. Third is remission of death sentence. Fourth is commutation of death sentence. Okay, जो pardon है, that is not in governor's power. Yes, governor may suspend a death sentence, governor may remit a death sentence, or governor may commute a death sentence. These powers are there with the governor, and this power is there with the president only. So this is important to remember. Okay? So next point is that judicial review of governor's decision on mercy petition. जब गवर्नर किसी मर्सी पिटीशन के ऊपर डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है या नहीं. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन ए मर्सी पिटीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो उसमें क्या हमने किया था कि जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल. सिमिलरली इन जुडिशियल रिव्यू ऑफ गवर्नर्स डिसीजन on mercy petition, yes, judicial review is possible, right? But it is not so common. Again, I would like to mention here, in the following cases, the governor's decision on the mercy petition is amenable to judicial review. कौन से cases? Number one, governor acted without being advised by the government, because the advice of the Council of Ministers is mandatory for the governor in such cases, and if the governor has acted without being advised by the government, so then it is subject to judicial review. इसका judicial review हो सकता है. Governor has transgressed his jurisdiction, right? So governor ने अपनी jurisdiction के beyond जाकर के जो है mercy petition पे काम किया है, then governor has passed an order without the application of mind, and fourth, the order of the governor is nullified. So these are the various you can say cases, right? Or these are the various points, right? You can say under which the judicial review of a governor's mercy petition can be held, and these points were pronounced by the Supreme Court in Satpal versus State of Haryana case. Okay? So this is there. Next, what did the court observe in Perarivalan's case? This is very, very important for the examination, right? So Perarivalan's case में court ने क्या observe किया है? The first thing which has been observed by the court is that the advice of state cabinet is binding, okay, on the governor in matters relating to commutation or remission of sentence under Article 161. Very important. It means that the governor must have to act in accordance with the advice of the Council of Ministers, right, in matters related with the commutation or remission of sentence under Article 161. Second is governor has no power to refer a recommendation made by the state cabinet to president, right? So governor है जो वो you can say state cabinet ने जो governor को recommendation की है, सिफारिश की है regarding the clemency of a person, right? So he has no power to refer that to the president, right? So in Perarivalan's case, what happened? The government of Tamil Nadu recommended the governor of the state to you can say to grant you can say pardon to Mr. Perarivalan, right? Because he was under the life imprisonment at that time. So, but the governor referred the
state cabinet's recommendation to the president, and the Supreme Court has observed that the act of governor to refer the clemency petition, uh, uh, to refer the recommendation of the state cabinet on a clemency petition to the president is unconstitutional. So governor cannot do so. So this is an important point. And the next point is governor's non-exercise of power under Article 161 is not immune from the judicial review, right? So ये जरूरी नहीं है कि अगर गवर्नर आर्टिकल 161 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्ट करेगा तभी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, नहीं. If he does not exercise the power, even then the judicial review can be there. Okay. So next observation by the court in this case. So that is that due to prolonged delay by the governor in deciding the petition, the Supreme Court exercised its power under Article 142 and directed the release of Perarivalan. Okay. So because गवर्नर ने पेरारीवालन की जो पिटीशन थी उसको डिसाइड करते हुए बहुत वक्त लगा दिया, बहुत समय लगा दिया, सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो आर्टिकल 122 के अंदर एक्सरसाइज करते हुए पेरारीवालन की रिलीज का ऑर्डर दिया है. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द सेंटर्स प्ली that the president exclusively has the power to grant a pardon in case under section 302 of the IPC, right? क्योंकि जब ये पेरारीवालन का केस जब सुप्रीम कोर्ट अभी सुन रही थी तो सेंटर की उसमें प्ली क्या थी? ओके, सो वो कहते कि अगर किसी पर्सन को सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी के अंदर अगर उसको यू कैन से सेंटेंस हुई है तो उसकी पार्डन सिर्फ और सिर्फ यू कैन से प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते. क्योंकि आई एम अगेन रिपीटिंग हियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, राइट, सो पार्डनिंग पावर lies with the president only. Governor has no pardoning power in that case, right? But in case of the life imprisonment, okay, the governor has the pardoning power in that case. Okay, so please bear this in mind. Okay, so in this particular case, the Perarivalan's case, right? So in 2014, the Supreme Court, okay, the Supreme Court commuted his death sentence into life imprisonment. Okay, so he was under the life imprisonment now, not under the death sentence. Okay, so that is why the governor could pardon in such cases, right? Next, Article 142(1). So, which is important about this, right? So, what is there that Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or order to make such order as is necessary for doing complete justice. Okay, so see, as I told in one previous video also, that complete justice देना हमारी न्याय प्रणाली का दायित्व है, right? So that is why, so if it is necessary for doing complete justice, then in that case the Supreme Court may pass any decree, order, any order, right, to ensure the complete justice to an individual. So this is important point. In any case or matter pending before it. Okay, so if some matter is pending before it, so in that case the Supreme Court may make any decree or order in that case, right? And any decree so passed or order so made shall be enforceable through the territory of India, right? So if the Supreme Court makes any such order, so that shall be you can say enforceable in the entire territory of India. Okay, so this is the important point here, right? So what is important here, that to make the complete justice. Okay, so Supreme Court may pass any order, any we can say decree or order,
Okay, any decree or order, and the decree or order thus passed by the Supreme Court shall have the same effect as a law made by the Parliament. Okay, and that shall be enforceable within the entire territory of India. Okay? So next is what did the Supreme Court observe in 2014 case of Perarivalan and two others? Right? So 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट पेरारीवालन की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करती है, कम्यूट करती है, सो एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, राइट? सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू नो. So at that time, what did Supreme Court observe? That inordinate delay, okay, caused by the executive in doing in deciding the convict's mercy petition was a violation of their fundamental right under Article 21, right? So fundamental right under Article 21 is a right to life, okay, and personal freedom. So this is an important fundamental right. So सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया तब कि अगर एग्जीक्यूटिव किसी कन्विक्ट की मर्सी पिटीशन के ऊपर डिसीजन लेते हुए इनऑर्डिनेट डिले, बेलोड़ा डिले करती है, okay, so that would be amounted to violation, that would amount to violation of the fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. The second is the President and Governor must exercise their clemency powers under the Constitution within the bounds of constitutional discipline. Very important. Okay, so when the President and Governor Governor decide a mercy petition, right, so they are bound to remain within the constitutional discipline. This is the one point. And do in an expeditious manner means to avoid the inordinate delay. Okay, to avoid inordinate delay. देरी नहीं करनी, जितना जल्दी हो सके मर्सी पिटीशन के ऊपर डिसीजन होना चाहिए, राइट, उसके ऊपर inordinate delay नहीं होनी चाहिए. So this is clear. Comparison of clemency powers of the president and governor, right? So president and governors की जो clemency powers हैं, उनके अंदर उनमें difference क्या है? So first is that is the pardon of death sentence, right? So president has the pardoning power, governor doesn't have the pardoning power. Second is suspension, remittance or commutation of death sentence. Okay, so इसमें president, yes, he has the you can say power, clemency power we can say, and governor does also have the clemency power. Then court martial. In court martial cases, only the president has the clemency power. Governor doesn't enjoy any such power. And jurisdiction, right? So president's clemency power, right, you can say that is subject to the offense against the union law, and it is against if an offense is against state law. But yes, as we have already discussed, that in case of pardon of death sentence, okay, pardon of death sentence, whether under a state law or under a union law, okay, the pardoning power remains with the president only. So governor does not enjoy pardoning power in that case. Okay. Next is important court judgments. So what are the important court judgments so far in this context, and what are the important observations by the court in those cases, right? So here the point is that the power of the president and governor to grant remission of a sentence is absolute and unfettered. Unfettered means there is no restriction on that. Okay, there is no restriction on that. Unfettered, right? So then delay in consideration of mercy petition amounts to torture, right?
सो अगर मर्सी पिटीशन को कंसिडर करते हुए बहुत देरी कर दी जाती है तो दैट अमाउंट्स टू टॉर्चर, राइट. सो दिस was observed or you can say said by the Supreme Court in Shatrughanan Chauhan case. Okay, and the first was that state of Haryana versus Jagdish, right? So in which the court observed that the power of president and governor to grant remission of a sentence is absolute and unfettered. Grant of pardon by the president is an act of grace, and it cannot be claimed as a matter of right. Very important point, right? So it is not a right, right? So you don't have, so means a convict doesn't have the right to, right, compel the president to consider the mercy petition. It is an act of grace, right? So we cannot take it as a right. So this is again important. Okay, so next is should there be an advisory board to advise the president on deciding a mercy petition, right? So actually, as far as the advisory board is concerned, right? So in America, the institutions like advisory board do exist in some states. Okay, so in some cases, in some states, there the constitution vests the power exclusively to the advisory board, right? So कुछ states ने तो अपने constitution के through ये जो क्लीमेंसी पावर है, मर्सी की पावर है, जो वो पूरे तरीके से एडवाइजरी बोर्ड को ही दे दी है, और जैसे एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करता है वैसा गवर्नर करता है. In some states, the constitution prohibits the governor from granting clemency, right, if the advisory board has recommended otherwise, right. So कुछ states में ऐसा है कि अगर एडवाइजरी बोर्ड क्लेमेंसी के फेवर में नहीं है तो गवर्नर क्लेमेंसी ग्रांट नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज बट इंडिया के केस में शुड देयर बी एन एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट और गवर्नर while deciding the cases of mercy petition, right? So there are certain difficulties. What is the first difficulty in India's case? The first difficulty is that it would require a constitutional amendment, right? So अगर हमने कोई advisory board बनाना है जो clemency power को exercise करते वक्त president या governor को you can say advise करे, so in that case constitutional amendment would be required. Okay, and the second thing is that the advice of the board cannot be made binding on the president. So this is the next point. And next is controversies would arise if the president rejects the board's advice, right? अगर कल को president board की advice को reject कर देते हैं तो भी controversy आएगी. And the next thing is that to decide about the members of the advisory board, right? So there can be you can say sitting judges जो हैं they can be members. There can be retired judges who can be members. Okay, or there can be non-judicial persons who can be members. But in तीनों के अपने अपने merits demerits रहेंगे. So which I am not going to discuss here. Okay? So section 302 of IPC. So Indian Penal Code का जो section 302 है, because this is a common word we have often you can say heard it about that धारा 302, right? So the section punishes the offense of murder, right? So ये murder के offense के केस में ये section लगता है, right? So इसमें क्या होता है, जो convict है या जो accused है, he can be granted the death penalty or he can be granted the life imprisonment, awarded the life imprisonment, okay, along with the fine. Okay, so what is the punishment under the under section 302? Okay, so one thing is death penalty. Okay, so and the second is there can be the life imprisonment, and the third is there can be fine, right? इन दोनों में से एक, and okay, और ये है जो ये
या ये दोनों हो सकते हैं, ओके, इन दोनों में से एक प्लस फाइन ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, ओके, इन केस ऑफ murder by a person, right? Next, the IPC was brought into force in 1862 during the British rule, right? We were talking about section 302 of IPC. So it is mentioned here that IPC was brought into force in 1862 by the British government in India. So one who commits a murder is prosecuted under this section only. Okay, so this is also important point. So next is statutory provisions related to clemency. So clemency से related कौन-कौन सी statutory provisions हैं? So as I have already talked in the beginning of the lecture that there are certain statutory provisions under the CrPC. So what are those sections? Section 432, Section 433, Section 433A, Section 435. Okay, so see the next slide for provisions under these sections. So what are the various provisions under these sections? That is 432, 433, 433A and 435. So one is the section 432. So what is there? The appropriate government may suspend or remit, okay, a sentence in whole or in part, with or without condition. State government can also use this power. Okay, so one thing is that what is that appropriate government? Okay, what appropriate government can do? It may suspend or remit a sentence, right? Whether whole sentence or sentence in part, with condition or without condition. Okay, and the state government can also use this power. So this is important. Next is section 433. That is the commutation of a sentence to a lesser one by an appropriate government. Okay, so government may commute the sentence by a lesser one. Next is Article 433A. It prevents the premature release of some life convicts before they spend 14 years in jail. Okay, so कुछ life जो imprisonment में convict होते हैं, so उनको वो कहते कि minimum 14 years jail term जब तक वो पूरी नहीं कर लेते तब तक जो उनकी जो है यू कैन से रिलीज नहीं हो सकती. सो प्रीमेच्योर रिलीज उनकी नहीं हो सकती. सो ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है. नेक्स्ट इज सेक्शन 435. ये कहता है कि अगर किसी केस में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की है या किसी केस में सेंट्रल एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की है या कोई जो रॉन्ग कमिट हुआ है, that is under the central act. So in that case the state government, okay, can release a convict only after consultation with the state government. Okay, so अगर किसी मामले की सीबीआई ने यू कैन से इन्वेस्टिगेशन की है या किसी सेंट्रल एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की है या किसी सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट किसी पर्सन ने कोई रॉन्ग कमिट किया है, सो इन दैट केस इफ ए स्टेट गवर्नमेंट राइट वांट्स टू रिलीज ए यू कैन से कॉन्विक्ट, सो दैट शुड बी डन in only after consultation with the central government. So in that case the consultation of the central government, okay, that is a must. So this is important point. Next, a comparison of constitutional and statutory provisions, right? So as we have already discussed that the constitutional provisions, we can say, right, so though that is related with the article 72 and article we can say 161. Article 72 and article 161, it deals with the clemency powers of governor, and article 72 deals with the clemency power of the president. And statutory provisions, we have just discussed that the provisions under CrPC,
which is there in Article 432, Article 433, Article 433A and Article 435. So इनमें difference क्या है, right? So Section 432 and Section 433 of CrPC are not a manifestation of Article 72 and 161. जो दोनों अलग हैं, दो देखने में हमें सेम लगते हैं, पहली बात तो ये है, right? So this was decided by the court in Maduram versus Union of India. Okay. So next, only president and governor can exercise powers under Article 72 and 161, right? Though with the advice of the that is the Council of Ministers, right? Though with the advice of the Council of Ministers, right? So in case of that is the president, the advice of the Union Council of Ministers will be required, and in case of the governor, the advice of the State Council of Ministers would be required. So that is there. But as far as the exercise of statutory provisions is concerned, that the center on state governments can exercise these powers without consulting the president or governor, right? So there is no need to exercise those powers through the president or the governor, right? So you can say center or state governments can exercise those powers without the president or the governor is being consulted. So this was today's lecture. So this lecture is important for your UPSC examination. So I hope कि आप सबने इस लेक्चर में से कुछ गेन किया होगा. सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय. थैंक यू वेरी मच.